Hi everyone, welcome to the lecture 8 of the Ultimate Python course. आज हमें देखिबा मेमोरी मैनेजमेंट विषय तमनको नोट्स लिखिबा दरकार नाही काहे कि हम लेक्चर स्लाइड्स और नोट्स बोथ डिस्क्रिप्शन रे दे देछि। तो मेमोरी मैनेजमेंट रे कोन सब रहिला इंटरनिंग, देन मेमोरी मैनेजमेंट इन डेटा टाइप, देन रेफरेंस काउंटिंग एंड गार्बेज कलेक्शन एई सब विषय रे वन बाय वन देखिबा। देखो केमिति बाकी सब लैंग्वेज रे मेमोरी मैनेजमेंट होउची जेमिति कि सी++ रे कोन हे थाए मैन्युअली मेमोरी टा मैनेज करि थाउ जेमिति कि बाय यूजिंग मैलॉक फंक्शन किमा फ्री फंक्शन हमें मैन्युअली सेठी करबा को पड़ी था बट पाइथन रे मेमोरी टा ऑटोमेटिकली मैनेज हे था हमको मैन्युअली किछि करबा को पड़ी न। Then interning corner. So interning is a process where Python automatically reuses immutable objects like integers or strings to save memory when the same values are used repeatedly. ता माने कोन सपोज एठी मु लिखिली s1 equals to hello, then it is a string variable. So in memory an object will be created for hello and s1 ताकू refer करिवो. Then again जदि मु लिखिली s2 equals to hello, then s2 भी काहाकू refer करिवो ए सेम hello को ही refer करिवो. एटा हला हमर इंटर्निंग. तो इंटर्निंग रो एडवांटेज ता कोन इटा सिंपली अवॉइड करि थाए डुप्लीकेट मेमोरी एलोकेशन. जदि मेमोरी रे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ता अवेलेबल अछि ताहेले अगेन एंड अगेन हमकु ऑब्जेक्ट ता क्रिएट करिबा को पड़िबो. देन जदि मोर इंटीजर मोर मेमोरी रे इंटीजर पाई -5 to 256 ऑलरेडी क्रिएट हेकी अछि. जदि मो ताकू यूज करिबा पई चाहूची देन सिंपली मो ताकू रेफर करिबी. त माने मु कोन करूची जदि एटा मोर मेमोरी सो ऑलरेडी मेमोरी रे पाइथन कोन करि थाए ए जो -5 to 256 वैल्यू प्री लोड करिकि थिबो जेंति कि -5 -4 so on up to 256. जदि मु लिखली a equals to -5 then नुआ ऑब्जेक्ट आउ मेमोरी रे क्रिएट हबो नाही -5 पाई सिंपली दिस -5 will refer to this one यहाँ कुसे refer करिबो. तो एई जो -5 टा 256 ऑलरेडी मेमोरी रे अवेलेबल अछि ऑलरेडी प्रीलोड हेकी अछि यदि मते यूज करिवार अछि देन सिंपली मु ताकू रेफर करिबी. देन आमे देखिबा मेमोरी मैनेजमेंट डेटा टाइप रे मेमोरी मैनेजमेंट इंटीजर रे केमिति होची जेमिति कि मु कहली इंटीजर रे ऑलरेडी स्मॉल इंटीजर्स वैल्यू जेमिति कि फ्रॉम -5 to 256 ऑलरेडी इट इज अवेलेबल इन मेमोरी. सो जदि मु याको यूज करिवा पई चाहूची देन सिंपली मु एई वैल्यू ताकू रेफर करिवि ता पई नुवा ऑब्जेक्ट क्रिएट हबो नाही. देखो एठी एग्जांपल निया जाईची a वैल्यू ऑफ each 10 वैल्यू ऑफ b each 10. then जदि मु ताकू प्रिंट करिवा पई चाहूची by using the id function then देखो both id will be same. दुई जनकर id ता सेम आसिला त माने गोटी ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हेची ए जो 10 पाई गोटी ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हेची and both a and b is referring to the same object here. Here also the same thing. A रो value -5, B रो value -5. So the id of both of them will be same. Then next a equals to 257, b equals to 257. In 80 देखो किछि अलगा केस अछि 80 both रो id अलगा आसीबो काहे कि ना 80 257 ता दुई थरा मेमोरी रे क्रिएट हबो. देखो एठी id यारो और यारो अलगा आसीछि काहे कि ना दुई थरा दुईटा आइटम मेमोरी रे क्रिएट हेछि सेति पई दुई जनकर id ता अलगा आसीछि. देन डेटा फ्लोट रे केमिति हमें मेमोरी मैनेजमेंट करिबा. फ्लोट रे इंटरनिंग ता फॉलो हुई नाही. वी डोंट फॉलो इंटरनिंग इन फ्लोट मींस पाइथन डोंट फॉलो इंटरनिंग इन फ्लोट. इंटरनिंग ता ओनली इंटीजर और स्ट्रिंग पाई ही अछि. एठी केतरा एग्जांपल निया जाईची. द वैल्यू ऑफ a equals to 10.0,
D is also 10.0. When we want to print the ID of both this value, then देखो एठी दुई जनकर ID कोन different आसीची. एठी देखो 257.01, here also 257.01. एठी मध्ये देखो दुई जनकर ID जेतेबेले मु प्रिंट कली दिना जाको डिफरेंट आसीची. देन नेक्स्ट ए केस भी से बोथ रा ID डिफरेंट आसीची. ता माने एठी इंटरनिंग ता फॉलो हो नाही, आमे डिफरेंट ऑब्जेक्ट ता क्रिएट होउची. देन देखिबा स्ट्रिंग रे. तो स्ट्रिंग रे इंटरनिंग ता फॉलो हुए ओनली फॉर शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंटली यूज स्ट्रिंग. ता माने जदी मो स्ट्रिंग रा लेंथ छोटा अछि किबा जो स्ट्रिंग ता frequently use होची ताहा पाई ही इंटरनिंग ता follow हुए. So interning doesn't follow for large strings or dynamic strings. Large string or dynamic strings पाई interning ता follow हुए नहीं strings से. For example here s1 equals to rbr, s2 equals to rbr. जदि मु ताको print करबी then both id ता same आसीबो. ता माने गोटी ही रेफरेंस rbr रो क्रिएट होची और ताहा को ही रेफर करूछंती both s1 and s2. If in the second example देखो s1 रे अछि rbr star is teaching toc and cd. s2 रे मध्ये अछि rbr star is teaching toc and cd means compiler design. So here if I want to print the id of both these variables, then simply देखो इठी तमन को देखा जाउथिबो सेम अछि बट इटा देखो डिफरेंट अछि. डिफरेंट आईडी ता मते से दबो. ता माने दीटा अलगा अलगा मेमोरी रे ऑब्जेक्ट क्रिएट हेची काकिना एटा कोन गोटे लार्ज स्ट्रिंग सेति पई अलगा अलगा मेमोरी रे ऑब्जेक्ट क्रिएट हेची. सेम ताको से रेफर करू नाही, सेति पई बोथ रा आईडी ता डिफरेंट आसीला. इठी देखो एंड आल्सो ए जो स्ट्रिंग रे इंटरनिंग ता फॉलो होई नाही पर डायनामिकली क्रिएटेड स्ट्रिंग. देखो फॉर एग्जांपल नेम रे मु लिखिछि rbr, अगेन नेम 1 रे rbr सेम वैल्यू अछि. देन मु कोन लिखिछि एठी a equals to rb, then c equals to r, d equals to a plus c. तो मु स्ट्रिंग्स पिसरे डिटेल्स रे जाइनी, डिटेल्स रे पढा हेनी. नेक्स्ट लेक्चर रे मु ताको कवर करिबी. एठी देखो सिंपली कोन आसीबो प्रिंट. जदि मु प्रिंट करिबी देयर आर फोर प्रिंट स्टेटमेंट हियर. जदि मु प्रिंट करिबी तो सिंपली प्रिंट b कले rbr आसीबो. देन देखो नेम और नेम 1 को मु प्रिंट करले बोथ आईडी मते सेम मिलिबो काहे ना हियर कोन हिची सेम rbr इज one object is created and both name and name 1 is referring to the same object को refer करूछंती. That's why id is same. Then again जदि मु प्रिंट करबी id of d, then मते एठी कोन डिफरेंट id मिलुची. That mean कोन ता माने कोन इंटरनिंग ता फॉलो करू नाही फॉर डायनामिकली क्रिएटेड स्ट्रिंग. नेक्स्ट रहला तमरो रेफरेंस काउंटिंग आउ गार्बेज कलेक्शन. तो कोन हिथा जते बेले हमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करि थाउ गोटे पॉइंट रे से ऑब्जेक्ट रो आउ किछि रेफरेंस रहे नाही. ता माने से ऑब्जेक्ट रो आउ किछि यूज न थाए. ता माने आउ केही भी ताको यूज करू न थांती. तो से जगह रे पाइथन कोन करिवो ताकू डिलीट करिवो. सो डिलीट कर से ऑब्जेक्ट जाको को डिलीट करिवो. सो डिलीट करबा पई से कोन फॉलो कोन चेक करिवो रेफरेंस काउंटिंग ता चेक करिवो. जदि रेफरेंस काउंटिंग रो वैल्यू 0 अछि ताहेले से पाइथन ता से ऑब्जेक्ट को सिंपली डिलीट करिवो. ता माने कोन देखो जदि म लिखिली s1 इज अ वेरिएबल जोति कि म लिखिछि हेलो, then s2 भी लिखिछि कोन मु hello, then one object will be created for hello and s1 and s2 both will refer to hello. तो इमान को रेफरेंस काउंट कितटा ऑब्जेक्ट कितटा रेफरेंस काउंट हो यार रेफरेंस काउंट विल बी 2 हियर काहे ना दुईटा ऑब्जेक्ट या को दुईटा वेरिएबल या को रिफर करूछंती. देन जदि मु लिखिली s1 equals to world, then गोटे नुआ ऑब्जेक्ट क्रिएट हबो world और एबे ए s1 ता ए वर्ल्ड को रिफर करिवो. ए पूरा रेफरेंस आउ रहिबनी. तो इटा कोन हिजिवो रेफरेंस काउंटर हिजिवो
1. Then जब मैं again लिखली h2 equals to suppose python, then another गोटे object create हबो for python in memory, and now h2 will refer to this python and how a जो reference टा मोर पड़ेबो. then reference count टा केते हे जिवो simply 0 हे जिवो. तो कौन करिवो सेही केस रे पाइथन टा ऑटोमेटिकली ए जो हेलो ऑब्जेक्ट जोटा मेमोरी रे क्रिएट हेकी अछि ताकू डिलीट करिवो. सो कौन लिखा है पाइथन रे पाइथन टा ऑटोमेटिकली ट्रैक करू थाए रेफरेंस काउंट रो आउ जहार वैल्यू 0 रहिला से वैल्यू से ऑब्जेक्ट ताकू से डिलीट करि थाए. आई होप कि तमन को वीडियो भल लागुची. जदि भल लागुची ताहेले सब्सक्राइब करो और तमरो सब फ्रेंड मानन को सहित शेयर करो.